लंबी ट्रेन हो गई। काला शाह काकू टूल प्लाजा में ये है M2 मोटरवे फॉर इस्लामाबाद और ये है N5 कराची टू पेशावर फॉर इस्लामाबाद। टूल प्लाजा गुजरांवाला हम सफ़र कर रहे हैं N5 पर। ट्रैफिक पता है क्यों रुकी हुई है? वो आगे भैंसें जो है ना रोड पार कर रही हैं। अब हाईवे पर भैंसें भी रोड पार करेंगी। अभी सफ़र शुरू है लाहौर टू इस्लामाबाद वाया N5 पर और जो इसका डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर। और अगर आप मोटरवे पे जाएं जो कि लाहौर टू इस्लामाबाद है उसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन है 380 किलोमीटर्स। अभी हम जा रहे थे तो रास्ते में खारियाँ ख़त्म हो चुका है, खारियाँ पे रुके हुए हैं और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लिया है। अब आगे चलते हैं। दिन के बजे हैं 12। 4 घंटे मुसलसल लाहौर से लगातार बाइक चलाई है और अभी यहाँ पे स्टॉप किया है। अब आगे चलते हैं। तकरीबन 140 किलोमीटर बाकी है, 3 घंटे अभी लगेंगे अगर ब्रेक ना लगाया तो फाइनली आज हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। जो नेक्स्ट ट्रिप है नॉर्दर्न पाकिस्तान खुजराब का वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद वाह, रावलपिंडी में जाते हुए रास्ते में पहाड़ियाँ नज़र आ गई हैं। ओए क्या कर रहा है भाई।
रही है इस वक्त राइट हैंड पे। मैं भी अभी जो पीछे दरिया गया था वो दरियाए जहलम था, और हम इस वक्त हैं जहलम में। दरिया कौन सा दरिया है पता नहीं वजीराबाद सिटी में, लेकिन जो नाम है उसका वो आ रहा होगा स्क्रीन में। और यहाँ पे मैकडोनल्ड भी है, KFC। रावलपिंडी ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर है यहाँ से। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे देखें ओल्ड ब्रिज में भी रेलवे ट्रैक है या जस्ट अमेजिंग। उस तरफ पहाड़, बीच में रेलवे ट्रैक और इस तरह ये पुल बहुत ही आला। वाह, पहाड़ियाँ कितनी नज़दीक हो गई हैं और हम इनके बिल्कुल साथ से जाएंगे ना।
अभी ज़रा रुके हैं, सामान ढीला हो गया था, सामान बांधा है। और ये जो है वो है सुहावा शहर, और जो रावलपिंडी है वो तकरीबन 70 किलोमीटर है। यहाँ पीछे बहुत ज़बरदस्त पहाड़ियाँ थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो सका, वो SD कार्ड फुल हो गया था, इस वजह से पता ही नहीं चला और वो सीन मिस हो गया। चलते हैं आगे। सीधा रोड जो है वो रावलपिंडी जा रहा है, राइट पे जाएंगे तो इस्लामाबाद आ गया। तो मैं टर्न करने लगा हूँ राइट पे।